So coming to the question from this topic, animal tissues, from the chapter structural organization in animals, right? So the first question is to distinguish between the different of the pairs. This is the first pair, that is distinguish between simple epithelium and compound epithelium. Yes, you will tell me the differences. What are the differences between simple epithelium and compound epithelium? Yes, Gitesh. Start with the first point of difference. मैम सिंपल Yes, ma'am. हाँ जी, बोलो बोलो. सिंपल में वन लेयर होते हैं, कंपाउंड में मोर देन वन लेयर से जो Yes. टिश्यूज बनते हैं. Very good. So simple epithelium has single layer of the cells, whereas the compound epithelium has the multiple layers or the number of layers arranged one above the another, forming the compound epithelium. Next difference. Yes. Anybody else? You can also write down the points of मैम differences. कंपाउंड में हाँ जी बोलो. एंडोक्राइन आते हैं. क्या होता है? मैम कंपाउंड में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, Compound. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन द कंपाउंड लेयर. And are they not present in the यस simple? सिंपल में. एक्सोक्राइन एंडोक्राइन किस सेंस में बोल रहे हो? Simple epithelium that acts as an endocrine as well as exocrine. नहीं मैं कंपाउंड में कह रहा हूँ कि कंपाउंड में एक्सो और एंडो होते हैं. किस तरीके से? एंडो एक्सो ग्लैंड्स होते हैं कंपाउंड में. एग्जाम्पल बताओ. Give an example to justify that the कंपाउंड की compound epithelium has both exocrine and endocrine glands associated with it. I don't think this is a point of difference with the simple and the compound epithelium. नहीं मैम होता है. Epithelium layers में तो नहीं हम इसको दे सकते ना point of difference. Any other point? You can say that being a multiple layered as they are layered one above the another. So they are basically in the simple epithelium, you can say that they are arranged over the basement membrane. And whereas in the compound, all the layers are not arranged directly in concern with the or in connection with the basement membrane. ये point दे सकते हैं, है ना? And what else? Also having more layers, it gives more protection to the underlying cells. Whereas the one that is having the simple epithelium, that is having the single layer, this provides a less of the, you can say the protection to the cells. Underlying cells of hair hyni, that is only the basement membrane. So there is less of the protection, or you can say this is the only providing the other functions like that of absorption and secretions, but not the protections, because there are no underlying cells. But for the compound epithelium, there are underlying cells. So that is, they are also giving the protection to the underlying cells. ये points आप बना सकते हैं simple और compound epithelium. Exocrine endocrine वाला आप थोड़ा justify कर सकते हो, तो we will see to that. Shivam, if you can justify that particular point. नो नहीं नहीं. Okay, right. Okay, so next is the difference between the cardiac muscle and the striated muscles. Yes, that's simple. Yes, Gitesh, Mankirat, Mayank, Tushar, Varun, provide some answer for this. Points of difference between cardiac muscle and striated muscle. मैम कार्डियक इनवॉलंटरी है और जो स्ट्राइटेड मैम वो वॉलंटरी है. Function, that is cardiac is associated with the involuntary actions, whereas the striated is associated with the voluntary actions. Yes, or मैम डार्क एंड लाइन बैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्राइटेड में, कार्डियक में नहीं होते हैं. present, whereas in the cardiac we will write that intercalated discs are present. They also provide the same appearance, and that is due to the intercalated disc. It is not due to the actin and myosin that which is present within the this striated muscle tissue. Okay. Yes. Any other points of difference? Excuse me मैम. मैम कार्डियक ब्रांच्ड होते हैं और स्केलेटल मैम अनब्रांच्ड. हाँ, striated हम कह सकते हैं unbranched हैं, और जो cardiac हैं they are branched ones. Yes. और हाँ जी शिवम, आपको कुछ बोलना था? Excuse me मैम. हाँ
जी हाँ जी। मैम वो आपने जो स्ट्राइएशन वाला पॉइंट कराया है, आपने क्या कहा उसमें कि स्केलेटल में होती है, कार्डियक में नहीं होती? कार्डियक में क्या बोला, क्या बोला? आपने आपने कौन सा पॉइंट कराया था स्ट्राइएशन वाला? मैंने कहा था कि डार्क एंड लाइट बैंड्स ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट इन द दिस striated मसल टिश्यू, बट इन द कार्डियक इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरकलेटेड डिस्क। अच्छा ठीक है ना? तो आप उसमें ये भी नहीं बताओगे कि उसमें एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि आप लोगों ने मुझे है ना दैट इज ए बैंड आई बैंड, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट, दैट हाउ दे आर अरेंज्ड, सो दे प्रोवाइड द लाइट एंड द डार्क कलरेशंस। है ना? तो that appearance also comes over the cardiac, but that is due to the intercalated discs which are present over the in this associated with the surface of or the structure of the cardiac muscles. ठीक है? हाँ जी, ठीक है शिवम। यस मैम। कार्डियक में आप ये नहीं लिखोगे कि स्ट्राइएशंस एब्सेंट है। ठीक है, यूजुअली बच्चे क्या लिखते हैं, पहले वाले आप जब भी छोटी क्लासेस में लिखते थे आप लिखते थे तभी मैंने पूछा था। नहीं इसमें नहीं होते हैं ना, आप कार्डियक में लिखते थे नहीं होती, बट अभी ऐसा नहीं है, नहीं होती वाला कंसेप्ट तो खैर है नहीं है, बट आप इसमें ये लिखोगे कि दैट इज ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन, दिस इज ड्यू टू द इंटरकलेटेड डिस्क। यहाँ आप ये लिख सकते हो कि जो लाइट एंड डार्क जो एक नेम दिया है दैट इज टू द striated मसल टिश्यू, दैट इज आल्सो वेरी इट इज अ यूनिक फीचर, that is because of the presence of the light and dark bands only it is called as a striation. So the striations are very much clear in the striated muscle tissue, whereas these striations they are not very clear in the cardiac muscle, that is the clarity is less, you can say it is fade. ठीक है, faded होती हैं, आप ये कह सकते हो इसमें। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। तो the next is between the dense regular connective tissue and the dense irregular connective tissue, dense regular and dense irregular connective tissue। हाँ जी, बोलो points of difference। dense regular and dense irregular। dense regular, as the name is saying that there is arrangement of the fibrocytes, we have discussed in the revision class also that there is arrangement of these fibrocytes in the compact manner, है ना? But if it is dense regular, compactly arranged तो है ही है, dense दोनों में है, compactly arranged है, but if it is dense regular then we say they are arranged in the proper regular manner। regular manner का मतलब क्या होता है, that is they are in the you can say in a proper arrangement, like they are not randomly present here and there, they are present in the parallel lines like structures। Okay, and whereas for the dense irregular connective tissue it is the one in which it is found arranged in any of the directions, like it is branched, it is scattered here and there, and they will be compactly arranged though, but they will be present in the different directions, not in the parallel rows। Okay, so any other point of difference? यही है, are compactly arranged but the fibers are not oriented in any regular pattern। So the first point they have made is that is they are not oriented in any regular pattern, and the second is they run in the different directions with the cells। Okay, in the irregular connective tissue, dense irregular connective tissue। Okay, so you can write these points of difference in your notebooks also। If you don't know the answer for this, you can write down। The first is that for the dense irregular connective tissue, you can make the parallel one afterwards। For the dense irregular connective tissue, the cells and the fibers they are arranged compactly। compactly तो है ही है because of dense। ठीक है, so they are arranged compactly but the fibers are not oriented in a regular pattern। So the first point of difference will be they are not oriented in the regular pattern, whereas for the this irregular, sorry, for the regular dense regular connective tissue के लिए they are oriented in a regular pattern, that is they are arranged in the parallel lines, right? Okay, so the next is the fibers they run in the different directions with cells scattered between them। ठीक है, तो scattered here and there different directions में ये क्या है वो चले जाते हैं यानी arranged होते हैं। तो लेकिन in the case of the regular tissue it is arranged in the well arranged parallel lines, in the rows you can call it। Okay, the next difference is between adipose tissue and blood tissue। It is clear cut difference? Yes, Mayank, can you provide any difference point here? Adipose tissue and the blood tissue, adipose and blood। हाँ जी,
Anyone else? Samriddhi, Varun. Adipose is a type of loose connective tissue. Blood is a type of fluid connective tissue. एक सेकंड दोबारा बोलो. Adipose is a type of loose connective tissue. Hmm. Blood is a type of fluid connective tissue. Fluid tissue, very good. It is a fluid connective tissue. These both are the similarities here रहेंगी. These both are the connective tissue types. Whereas for this adipose, but for the adipose, it is the loose connective tissue. Whereas for the blood, it is the fluid tissue of the connective types. Yes, or Adipose has more adipose का fat function है than- बोलो. to store fats and blood का function है to मैम वो circulating fluid है जो transport करता है various substances Requirements in the body. of the body, हाँ. So blood जो है that basically supplies all the requirements of the body to the various cells, whereas the second one, that is the adipose, that helps to store the fat cells. Yes, fat layers को store करता है, fat cells को store करता है. और structure difference है और कोई इनमें दोनों में? Yes. They are made up of fibers and elastin proteins. Yes, they consist of the fibers, that is these adipose tissue that consists of the fibers, whereas the blood tissue that does not consist of the fibers. There are no fibers present within the fluid tissue, right? But there is the other components like that of the plasma and the cells which are immersed in. तो वो आप बता सकते हैं. But there is the fibers, they are absent in the blood, but they are present within the adipose tissue. Okay, right. Next is simple gland and the compound gland. Yes. Simple gland and compound gland. Who will give me the answer? And also the examples of the two. Simple gland or compound gland की examples भी देनी है आपको साथ में. Yes, anyone? Shivam? मैम ये तो हो गया है. कब हुआ? मैम सिंपल ग्लैंड में यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल होता है. यूनिसेलुलर वो गॉबलेट तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है और मल्टीसेलुलर है. सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड. सिंपल ग्लैंड. अच्छा, सिंपल ग्लैंड कैन बी वो हेटेरोक्राइन और एक्सोक्राइन वगैरह वो कह रहे हो आप? वो तो एंडो और एक्सो होते हैं. सिंपल ग्लैंड का मतलब कंपाउंड ग्लैंड तो फिर वही होता है. फिर कौन सा होता है कंपाउंड ग्लैंड की एग्जांपल बताओ. हेटेरोक्राइन. हेट्रोक्राइन कौन सा? पेनक्रियास. ठीक है, अब इसको हम कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है. किस वजह से? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन किस वजह से हैं वो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इट इज बिकॉज द सिंपल ग्लैंड हैज Addition. जैसे एक सिंपल ग्लैंड है, जैसे आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स हैं, या फिर अगर हम स्टमक की बात करें उनके ग्लैंड्स हैं, तो उनके केस में क्या है, देयर इज वन डक्ट आउट दिस, है ना, एक डक्ट है. लेकिन हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास के अंदर कितनी सारी मल्टीपल डक्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं. आप पेनक्रियास कैसे बनाते हो? पेनक्रियास जब हम बनाते हैं तो वी मेक इट लाइक दिस. ये सारी ब्रांचेस हम शो करते हैं ना इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. एंड देन देयर इज अ लीफी स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये इसी तरह से होता है ना. This is the branches. So what are these? These are the branches. These are the pancreatic ducts branches. Depending upon the number of the branches also, these are further classified. We have discussed the two classifications, that is endocrine, exocrine, and the second classification as the simple and the compound epithelium. Simple and the compound glands. Sorry, ये तो हमने अभी करा है. सिंपल एंड कंपाउंड अभी करा है. आपको मैंने जो करवाया था वो था यूनिसेलर, मल्टीसेलर एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. लेकिन ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. What is the difference between the simple gland and the compound gland? So this is a compound gland which has a system of the branches of the ducts. ठीक है, ये ducts का एक पूरा system बना हुआ है. That is, there are branches of these ducts associated. So it will be making it as a compound gland. ठीक है, no doubt it is acting as an heterocrine, it is acting as an exocrine, endocrine, दोनों. But along with that also, it is the one with the system of these branches of the ducts. ठीक है. So if they are having the multiple ducts, we say it is a compound gland, and if it is having a single duct, then we say it is a simple gland. Okay,
And what is the example of this compound gland? It is pancreas. And what is the example of the simple gland? Yes, intestinal glands. मैम कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या कह रहे हो गितेश? मैम सिंपल ग्लैंड की एग्जांपल कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती है हाँ एंडोक्राइन, बट आपको ये देखना होगा कि उसकी डक्ट एक होनी चाहिए, ब्रांचेस ऑफ सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये पूरा ब्रांचेस का सिस्टम नहीं होना चाहिए उसके अंदर ऐसे। ठीक है, डक्ट एक होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल ग्लैंड इट इज एन एक्सोक्राइन Okay. ग्लैंड विद अ सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट। लिख लो ये अगर आपके पास डेफिनेशन नहीं है तो, सिंपल ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड विद अ सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट। एक्सोक्राइन होना चाहिए, एंडोक्राइन तो डक्टलेस होते हैं ना। Whereas compound gland, it is an exocrine gland with a branched system of the ducts. You have to mention here exocrine also. क्यों exocrine? क्योंकि आपने यहाँ पे heterocrine बोला था, तो चार अभी आपने heterocrine बोला था। heterocrine जब हम बोल रहे हैं तो हम इसको endo भी मेंशन कर रहे हैं, बट अगर हम इसको एंडोक्राइन भी मेंशन करेंगे तो वो तो डक्टलेस वाला काम हो जाएगा, फिर तो हम उसमें डक्ट की बात ही नहीं करेंगे। अगर हम उसको एंडोक्राइन का नाम दे रहे हैं ना, हमने पढ़ा था ये फीचर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, और अगर है भी उनके अंदर डक्ट तो वो उस डक्ट को यूज नहीं करेंगे। हमने ये पढ़ा था ना एंडोक्राइन का। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है? बिकॉज इट इज हैविंग दीज ब्रांचेस, because of the structure of the duct only these are called as the compound or the simple glands. ठीक है, पहले जो किया था हमने गितेश, आपने बीच में बोला था कि हमने पहले कर लिया था, पहले जो किया था that was simple epithelium and compound epithelium. Now this is a simple gland and compound यस gland. मैम Okay, right. So mark the odd ones in each series. Now the odd one you have to tell me which one it is. Areolar tissue, blood, neuron and tendons. Yes. Which is the odd one? न्यूरॉन Why neuron? I repeat the terms again. Areolar tissue, मैम बाकी blood, सारे neuron, tendon. हाँ बाकी सारे कनेक्टिव हैं, ये नर्वस टिश्यू है। हाँ हाँ, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वेरी गुड। एरोलर, ब्लड और टेंडन सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और न्यूरॉन जो है दैट इज इट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज अ नर्वस टिश्यू। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड कार्टिलेज। समृद्धि, वरुण, मयंक, कार्टिलेज आप लोग भी आंसर दो बच्चे, ये तो इजी क्वेश्चन थे, इनके तो आंसर दो कम से कम। आर यू सिटिंग देयर मयंक, समृद्धि एंड वरुण? Yes, Gitesh, what is the second answer? RBC, WBC, platelets and मैम cartilage. कार्टिलेज Why cartilage? मैम क्योंकि सारे बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं बाकी सारे components of blood हैं, और ये जो cartilage है that is a kind of a connective tissue which is separately arranged in the animal tissues, right? Next is the pairs of, it is exocrine, endocrine, salivary gland and ligament. लिगामेंट Ligament, because endocrine, exocrine, these are the names of the glands, types or either the types or the name of the gland, but ligament is again a connective tissue. Then is maxilla, mandible, labrum. Achha, these are in concern to the cockroach which has been deleted, so no need to learn this, right? Okay, so the next questions, coming to the next, how do cardiac muscle fibers contract as a unit? Yes. How do cardiac muscle fibers contract by as the a help unit? of intercalated क्या है? Speak louder. by the help of an intercalated disc, calated disc. Yes, because of the intercalated disc. Intercalated disc are those particular units of the cardiac muscle tissue that which provides the contraction. That is the site of the contraction basically, right? So these passes on the signal from one cell to the neighboring, and so all the cells contract as a unit. Okay, the next is name the two types of the cells present in the neural tissue. Two types of the cells present in the neural tissue. Yes. Two types of the cells found in the nervous tissue or the neural tissue. One is the neurons, you know. Neuron तो पता ही है. Yes. और गैंग्लिया और organisms में, हाँ जी, neuroglia. Neuroglia are the cells which are found in the
lower organisms, nervous tissues, right? It is neuroglia. Neuroglia. Okay. Next is name the type of the connective tissue Excuse that me, ma'am. connects. हाँ जी, बोलो कितेश। मैम इंटरकलेटेड का क्या मतलब होता है मैम? इंटरकलेटेड हमने बनाई नहीं है कार्डियक मसल टिश्यू, जब भी आपको डायग्राम्स करवाए थे मैंने, जब भी चैप्टर कराया था तो हमने कार्डियक मसल टिश्यू को ब्रांच इस तरह से शो किया था, ये ऐसा, और फिर उसमें हमने ये ऐसे स्ट्राइएशन शो करी थी. These are the intercalated discs. These are the units where the contraction is actually taking place. तो contraction के लिए वो क्या है, एक यूनिट है जो मसल्स की contraction प्रोवाइड करती है. ठीक है, that is associated with मैम इन्हें तो जंक्शंस भी कहते हैं फिर. जंक्शन नहीं कह सकते. जंक्शन जो होती है वो एक सेल की दूसरे सेल के साथ है. ये अपने इस टिश्यू के अंदर ही उसके ऊपर, जैसे आप लोगों ने स्ट्राइएशंस नहीं बनाई मसल फाइबर के ऊपर, पढ़ा नहीं हमने मसल यस मैम, यस. है, क्या कह रहे हो? हाँ जी मैम, पढ़ा था. हाँ, तो उसमें मसल बैंड हमने बनाया. उस मसल बैंड के अंदर हमने कहा था कितने सारे मसल फाइबर्स हैं, हर फाइबर के अंदर कितने सारे सॉरी मसल बंडल्स हैं, हर बंडल के अंदर कितने सारे मसल फाइबर्स हैं. तो वो एक्चुअल में जो हमारे को लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं वो उस फाइबर से नजर आ रही हैं, लेकिन दे आर आल्सो विजिबल ओवर द मसल बैंड. पूरे बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर भी तो नजर आ रही है ना, है ना. तो ऐसे ही इनके टिश्यूज के अंदर है ये अरेंजमेंट है इंटरकलेटेड है. तो ये ऊपर पूरा एज एन ऑल कवरिंग के ऊपर भी नजर आ रही है एज डार्क लाइंस. तो दीज आर द इंटरकलेटेड डिस्क दैट विच आर द यूनिट्स ऑफ कंट्रैक्शन. जैसे हमारी कंट्रैक्शंस अगर होनी है, मैंने बताया था ना, स्किन लूज छोड़ी हुई है जहाँ पे कंट्रैक्शन होनी, फिर उसके बाद वो लूज जो स्किन है वो दोबारा रिलैक्स हो जाती है. तो ऐसे ही कंट्रैक्शन, हमारी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हमारी हार्ट के जो मसल टिश्यूज हैं उनके ऊपर भी इस तरह से स्ट्राइएशन जो है वो प्रेजेंट. Units providing the contraction and relaxations. Basically contractions, responsible for contractions. ठीक है? ओके मैम. Okay. So the next question was name the type of the connective tissue that connects muscle to bones. टेंडन. Tendons. Tendons. Yes. And bones at the joints. That Ligaments. लिगामेंट. ligaments. Yes. What technical term is given to the bone cells? Osteocytes. Osteocytes. And that to the cartilage cells? कॉन्ड्रोसाइट्स. Chondrocytes. Why are smooth muscles called involuntary muscles? Anji. Not in con- Because they are not in control in our of. Because they we are not, cannot they move their according don't to our wish. will. because they are not involved in the action provided by our own will, है ना? इसलिए involuntary बोल रहे हैं. But why they are Yes, so? ma'am. Why they are so? Why they are not providing our own will's action? Why? Striations नहीं. Because they are not associated with the skeletal muscle tissue which is under our control, है ना? जो skeletal muscle tissue है उसके साथ ये connected नहीं होती हैं, तो that is why they are also not being controlled by our own will. These are connected with the internal organs functioning. तो internal organ की functioning जो है that can't be controlled by our own will. Internal organs are not under our control, so that is why the muscles associated are also not under our control, है ना? So these are the muscles that which do not function according to our own will, right? That is why they are called as the involuntary muscles. Very good. Okay, name the communication junctions present in the cardiac muscle. Now these are the communication junctions, not that junctions जो हमने 3 types की पढ़ी थी. Yes, tell me. Name the communication junctions present in the cardiac muscle. मैम इंटरकलेटेड डिस्क. Intercalated disc. These are within the cardiac muscle. ठीक है? If we talk about the junctions like that, of what are the 3 types of the junctions we have studied between the tissues? Yes, name them. Tight junction, gap junction. Tight gap एंड adhering एदरिंग junction. जंक्शंस. Adhering junction, tight junctions, and third is गैप. gap junction. Okay, now tell me the function of all 3. What is the role of the gap junction? मैम गैप Hmm? जो 2 टिश्यू मैम उनको ज्वाइन करने जिनके गैप है जो 2 टिश्यू के बीच हाँ, उनको बीच ज्वाइन में करने gap में रखते हेल्प हैं करते हैं 2 सेल्स के बीच के. so that there is easy diffusion of the materials with the cells, है ना? The 2 cells they have a gap in between. If they are having this gap in between,
there will be easy diffusion from one cell to the another, so there is a gap in between, right? And what is the role of the adhering junctions? Yes. Anji Shivam, what is the role of the Means adhering junctions? सीमेंटिंग Anji, मैम सीमेंटिंग करनी मैम जो फासले साथ जोड़ देते हैं, बिल्कुल साथ जोड़ देते हैं, ताकि वो सेल्स जो हैं वो उनके एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके पड़े रहें, यानी कि वो सीमेंटेड रहें, है ना? एंड व्हाट इज द थर्ड? टाइट जंक्शंस. मैम लीकिंग ना हो, मतलब This, पास होते रहे इसको जोड़ने के लिए लीकिंग. this is to avoid the leakage. टाइट, जैसे एयर टाइट होते हैं ना हमारे जो कंटेनर्स होते हैं एयर टाइट, उससे आप याद रख सकते हो इसको कि जो टाइट जंक्शन है दैट इज नॉट टू प्रोवाइड द लीकेज ऑफ द सेल्स, एनी मटेरियल व्हिच शुड नॉट बी डिफ्यूज्ड आउट properly from the cell, that is the tight junction. It is quite tight. Okay, only cementing, only adhering, that is okay, that is only cementing layer बन गया उसके बीच में. हो सकता है कि जो मटेरियल है that is also being diffused, but it is a slow method. लेकिन in the case of the tight junction it is like quite fixed. Okay, so that there is no leakage of the materials from inside to outside of the cells, right? Okay. So the next question, again I'm repeating, there is no question from cockroach topic now for you people, so you are not to do this topic. Okay, cockroach topic आपने नहीं करना है, right? And not the questions also from the sample paper booklets and all. Okay, so next is, what are exocrine glands? Name the secretion of any two exocrine glands. What are exocrine glands? Name the secretions of any two exocrine glands. Yes. Ma'am, the glands which have proper ducts for the. The definition is not. Ma'am, जिनकी ducts होती हैं. हाँ, ducted होते हैं. Exocrine glands are those which are ducted, which provide the secretions in the form of enzyme or hormone. Enzyme. Enzymes. And do they pour their secretions in the bloodstream or to the organ? Blood. To the Target. Target site. Yes. Organ. And their target site is far off or it is nearly present? Nearly present. Nearly present. So these are exocrine glands. So exocrine glands जब आपने define करना है, the glands whose secretions are released through the ducts to the site of action. ठीक है? That is, ducts की presence भी है, site of action भी पास ही है, और अपनी secretions in the form of enzymes भी वो वहाँ पे secrete कर रहे हैं. तो अपने लिए सारा कुछ बताना है as a definition for the exocrine glands. Okay. The second question for this was, name the secretions of any two exocrine glands. Yes. Name the secretions of any two exocrine glands. Ma'am, एक pancreatic juice. Pancreatic juices by pancreas. Okay. और कोई? Ma'am, gall bladder आ सकता है इसमें? Gall bladder? No. Otherwise also we do not have that particular role now for the gallbladder. It is the main role is that of the liver. Liver pours the secretions in the gallbladder ducts. What other gland can you say? Yes, as an exocrine gland. Can't it be a salivary gland? Simple. है ना? It is providing the saliva as a secretion, containing the salivary amylase as an enzyme. तो enzyme भी secrete कर रहा है, duct भी है, और वो अपनी target site यानी mouth में, अपनी buccal cavity में तो भी कर रहा है secretion. So that is all performing the action of the exocrine glands. ठीक है? So the example can be one pancreatic juices from the pancreas, another can be the salivary secretions from the saliva secretions from the salivary glands. Okay. So the next is, right? Is this question okay? Okay. So the next is, what are the two types Yes, of ma'am. fibers found in the connective tissue? Mention their functions. What are the two types of the fibers found in the connective tissue? Mention their functions also. Yellow and white fibers. There are collagen white fibers and elastin yellow fibers. ठीक है? They are made up of the proteins. हम लोगों ने पहले बात कर ली है. White fibers are made up of collagen proteins, whereas the yellow fibers are made up of
Elastin protein. Elastin. Elastin. Ela- Yes. And what are their functions? Mention their functions. मैम येलो मैम इलास्टिसिटी येलो फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. Yellow one provides the elasticity, whereas the white one provides the rigidity. है ना, वो rigid strength बनाता है, और जो yellow वाला है वो flexibility देता है, elasticity देता है. ठीक है. Okay, so the next is name the type of the connective tissue that serves as a support framework for epithelium. Mention the cells types in it. I repeat the question. Areolar. Yes, it is areolar. Very good, Tushar. Good catch. That is just when you read it once and you get the answer, that is a very good thing. Very nice. Okay, I repeat this question for the others also. Name the type of connective tissue that serves as a support framework for epithelium. Support framework for epithelium. That is areolar tissue. है ना? That which is found within the skin and the muscle layers. That is the support framework it is providing, right? So mention the cells types in it. What are the cell types found in it? Macrophages, fibroblasts, Mast cells. mast cells. Mast cells, macrophages, fibrocytes. है ना? So these are the different kinds of the cells which are found in it. Okay, how are tendons different from ligaments? That difference you can write. हाँ जी, बता सकते हैं आप, जल्दी जल्दी में बताओ. Tendons are made of white collagen fibers. हाँ, Ligaments are made of yellow elastin fibers. more of white collagen fibers, otherwise yellow are also associated, whereas in the case of the white ligaments, it is a modification of the yellow fibers, and the tendons, they are the modification of the white fibers, right? Or Ma'am, tendons joins muscle with bones and ligaments bone to bone. tendons join muscle with bone, and bone with bone is joined by the ligaments, yes. Or tendons are more rigid, है ना? Whereas ligaments are मैम वो येलो और व्हाइट में कवर हो जाएगा ये पॉइंट तो. नहीं, आप उसको अलग बना सकते हो. being more rigid and being more elastic, ये बना सकते हो आप अलग पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन बताई है, उसके सेल टाइप बताई है ना. you can make the different points, right? Yes. So the next is bring out the major differences between the epithelial tissue and the connective tissue. The broad categories, epithelium and the connective tissue. Yes. What is the difference between epithelial tissue and connective tissue? मैम एपिथेलियम जो है लाइनिंग के लिए कनेक्टिव कनेक्शन के लिए. Epithelium forms the lining of the tissues, and connective, मैम कनेक्टिंग द टू. connective that connects the two of the tissue layers. Yes. Or क्लासिफिकेशन बता देंगे उसमें. हाँ बताओ, टाइप्स, इसके टाइप्स, इसका डिफरेंस नहीं होता. टाइप्स कभी भी नहीं लिखनी है हमने एज अ डिफरेंस पॉइंट. और बोलो जल्दी जल्दी. Epithelial tissue covers the free surface and is secretory and absorptive in function, whereas connective tissue that binds the two types of the tissues, and it is neither absorptive nor secretive. Okay. The cells in the epithelium, they are closely set, whereas in the connective tissue, the cells, they are scattered here and there. जैसे roller में अभी हमने किया. Epithelial tissue that has an extracellular material occurs as a thin film, right? Whereas in connective, extracellular material is a large in quantity. This is epithelium की एक line बनेगी और connective tissue पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा पूरा फैलेगा. That is around the body structure जहाँ पे भी arranged है. Then there is no supply of the blood vessels in the epithelial tissue, but there is the supply of the blood vessels in the connective tissues, right? You can also make a point that connective tissue that does not require the basement membrane, whereas epithelium that always requires a basement membrane for its formation. Okay, so your time is also over and your period is also going to be over. So we'll be discussing the next chapter tomorrow. That is, the next chapter will be the cell structure and the cell cycle, right? So we'll be discussing it tomorrow. Thank you so much. Go and join the other period.